Hello students. So today we are going to study about brain. Very important topic. So first we'll see what is first we'll see the parts. Okay. So the nervous system is mainly divided into central nervous system and peripheral nervous system. Central nervous system also divided into two parts, brain and spinal cord, and peripheral nervous system is also divided into two parts, somatic neural system and autonomic neural system. Let's see in details brain. Okay. So brain. So what is brain? So ब्रेन को हम एक्चुअली हमारा ह्यूमन ब्रेन ह्यूमन बॉडी का सीपीयू भी कहते हैं, ठीक है, बिकॉज इट्स एक्ट एज ए कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ आवर बॉडी. ओके. एंड ब्रेन जो है वो कंट्रोल एंड कमांड करते हैं मैक्सिमम ऑफ आवर इंपॉर्टेंट ऑर्गन लाइक हार्ट, लंग्स, किडनी. ओके. And it also control our balance, posture, temperature, hunger, and it also responsible for our attention, problem solving, intelligence, creativity, all these things. Okay. So brain is made up of soft nerve tissues. Okay. And mainly the weight of brain is 1.2 to 1.4 kg. Okay. So and also it connects with all our sense organ also, and all the impulses from coming from sense organ will be analyzed and respond in brain. Okay. Brain is made up of neurons. Okay. This neural circuit will be exchanged with the help of this neural circuit, the electrical signals will be exchanged. Okay. Inside the brain. Okay. So let's see about the brain in details. Okay. Here brain is divided into three parts with the basis of their functions and placement. Okay. See here I have draw a line diagram. Okay. This yellow portion is called forebrain. This is the biggest portion, and middle pink portion is called midbrain, and this sky blue portion is called hindbrain. Okay. So first is forebrain, then midbrain, then hindbrain. Okay. So forebrain consists of thalamus, hypothalamus, pituitary gland, limbic system, and cerebrum. Midbrain consists of superior and inferior colliculus and substantia nigra. So many other things also is there in midbrain, but only the important parts I have written. Okay. The hindbrain consists of medulla, pons, reticular formation, and cerebellum. Let's see one by one. So this is the picture of brain. Okay. See. So first is forebrain. Okay. This big portion is called forebrain. Okay. This whole portion is called forebrain. Yellow and orange portion together. Okay. Because forebrain is divided into mainly two parts. The yellow portion, the big yellow portion is called outer forebrain, and that orange portion is called inner forebrain. Okay. So forebrain mainly control our voluntary functions, like we have to go for work, or we have to dance, we have to move our body, we have to move our hands. All these voluntary functions will be controlled by our forebrain. Okay. So let's see what all the structure is there in forebrain. First is cerebrum. This big yellow portion is called cerebrum. Then this portion, this egg-like portion is called thalamus. Then below the thalamus it is called hypothalamus. Then this gland is called pituitary gland. So all together this portion will be called forebrain. Okay. So the next is midbrain. See, this small portion is called midbrain. This is situated in between forebrain and hindbrain. Okay. Next is hindbrain. Okay. So hindbrain contains pons, medulla oblongata, and the cerebellum. Okay. So these three parts togetherly called hindbrain. So midbrain and hindbrain normally control our voluntary functions like heartbeat, like respiration, all these things. Okay, understand? Let's see one by one. First, forebrain. In forebrain, first structure is cerebrum. Okay, let's see what is cerebrum. Okay. Cerebrum is the largest, and this is cerebrum. This whole brown color portion is called cerebrum. Okay. So cerebrum is the largest and developed part of human brain. Okay.
Cerebrum is covered with cranium. This portion is called cranium or skull. Okay. Skull or cranium is protect cerebrum from outer injuries. Okay. Then next, cerebral cortex. So what is cerebral cortex? The outer this outer and thick covering, okay, of this outer and thick covering of cerebrum, which is made up with a neuron, is called cerebral cortex. So this portion will be called cerebral cortex. Okay. So it is made up with nerve cells. Okay. It's called gray matter. Okay, just below the gray matter, it is made up with axon and it's called white matter. Okay, so in cerebrum, just below the cerebrum, we can see here this structure is called thalamus. Just below the thalamus, it is called hypothalamus, and this is pituitary gland. Okay, so what is the main functions? Okay, functions we'll see later. First we'll see another things, the brain hemisphere. Okay. So, the brain is divided into mainly two hemisphere. Okay, brain is divided. If we'll see from the longitudinal view, the brain will be divided into two hemisphere. Okay, this is left hemisphere and this is right hemisphere. Okay, okay. So, this in between these two hemisphere, there is a nerve fiber. Okay, there is a nerve fiber which connect both of the hemisphere. Okay, this is called corpus callosum. Okay, so in between two hemisphere, there is some nerve fibers which connect both hemisphere, right and left hemisphere together, and passes all the information, transfer all the information. So this nerve fiber is called कॉर्पस कैलोसम. ओके, अगर हम साइड व्यू से देखेंगे कि ये तो लॉन्गिट्यूडिनल व्यू से, टॉप व्यू से हो गया कि कॉर्पस कैलोसम ये वाला है. ठीक है, अगर हम साइड व्यू से देखेंगे तो कॉर्पस कैलोसम कहाँ है? ये जस्ट सेरिब्रम के नीचे ही कॉर्पस, ये जो पोर्शन है, ये जो रेड कलर का पोर्शन है, ये जस्ट सेरिब्रम के नीचे. ठीक है, इस पोर्शन को हम बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम. ओके, नाउ सी, now our brain hemisphere, left hemisphere and right hemisphere have different functions. Okay, and one more thing we have to remember, that left hemisphere will be control our right parts of the body, and right hemisphere sphere is control our left part of the body. Okay, let's see what all the function is there in these two hemisphere. First we'll see what all the function is there in left hemisphere. Left hemisphere will be control our right side of the body, and right hemisphere will be control our left side of the body. Okay, so left hemisphere will control all our creativity, our feelings, our concentration, photo memory. Okay, visualization process, our imagination, our decision making, our multitasking means together we are seeing the movie and writing the assignment, this is multitasking. Then intuition, suddenly अगर intuition हो गया कि अरे आज तो बारिश आने वाला है, ठीक है, इस तरह का intuition. Then all our arts and rhythm and active listening skill, जैसे कि अभी आप lecture सुन रहे हो, वो active listening skill है. So all these things will be controlled by our left hemisphere of brain. So the right hemisphere of brain क्या क्या control करता है? हमारा logic skill, हमारा daily activities, हमारा language and grammar, all the memories, analytical details, our science, our strategy, our facts and words of songs. Okay, all these things will be controlled or maintained by our right hemisphere. Okay, next we will see about the limbic system. It is also under so we will see the functions, total functions of, so what is the total functions of forebrain? Okay, so total functions of forebrain will be cerebrum will be thinking, their problem solving function, memory function,
voluntary muscle control function, carries and analyze information from all the sense organ and intelligence. All these things will be controlled by our cerebrum. Okay. Next, see the second part of our forebrain. It's called limbic system. This is very important, and it's also called emotional brain, because maximum and most of the emotions is controlled here. Okay. Emotional brain. Okay. So let's see. So the अभी लिम्बिक सिस्टम में क्या क्या पार्ट आता है ये याद रखने के लिए मैंने एक ट्रिक्स लिखा है यहाँ पर. ये क्या है? ये एक हिप्पोकैम्पस है. ठीक है. सो हिप्पोकैम्पस इज वेयरिंग ए हैट. ओके. ए हिप्पोकैम्पस इज वेयरिंग ए हैट. So I'll write here hippo and hat. H-A-T. Hat. Okay. So hippo stand for hippocampus. H stand for hypothalamus. A stand for amygdala. And T stands for thalamus. So these are all the parts of limbic systems. Clear? So H for hypothalamus, A for amygdala, T for thalamus, and H hippo for hippocampus. Okay. So we will only remember a hippopotamus is wearing a hat. Okay. Like this we can remember the parts of limbic system. Now we see what are the parts in details. Okay. First we will see this amygdala. This small purple color pear-like structure we can see here. Okay. This is called amygdala. Okay. So amygdala is mainly responsible for our all the emotional functions like fear, like anxiety, like violence and anger. Okay. अगर when amygdala is stimulated, जब ये stimulate होता है तब ये fear, anxiety, violence, anger, all this will happen. Okay. अगर किसी भी कारण में एमिगडाला डिमिनिश्ड हो जाता है. ओके. ठीक है. तो हमारा जो साइंस एंड सिम्टम्स दिखाई देता है वो है हाइपर सेक्सुअलिटी, इम्पल्सिविटी, ऑल दिस थिंग्स विल बी हैपन. ओके. अभी अगर हम बोलते हैं कि एमिगडाला फियर सेंटर, एंजाइटी सेंटर से वायलेंस क्रिएट करता है, एंगर क्रिएट करता है, तो एमिगडाला ना होने से अच्छा है. अगर कोई भी कारण बशर्त अगर एमिगडाला हमारा बॉडी से रिमूव हो जाता है तो क्या होगा? हमारा कभी फियर ही नहीं होगा, वो तो अच्छा होगा. ठीक है. पर नहीं, हर चीज का एक डीमेरिट्स भी होता है. मान लो कि आपकी बॉडी का एमिगडाला काम नहीं कर रहा है. ओके. सो क्या होगा? आपके सामने अभी एक शेर आ गया तो आपको बिल्कुल भी फियर नहीं आएगा, डर नहीं आएगा, आपको बचने का कोशिश भी नहीं करेंगे. ठीक है. सो हर चीज का एक डिमेरिट होता है. सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स. ओके. amygdala, it's control all our emotional responses. Okay. Next part is called this green color ring like C shape like structure is there. It is called hippocampus. Okay. Hippocampus. So what is the main functions of hippocampus? Hippocampus is mainly responsible for forming our new memories. Okay. जैसे वो जो भी शॉर्ट टर्म मेमोरीज होता है उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करके स्टोर करना हिप्पोकैम्पस का मेन काम होता है. जैसे कि अभी मैं जो क्लास ले रही हूँ वो आपका शॉर्ट टर्म मेमोरी में है. ठीक है. अभी अगर ये चीज आप बार बार ये पढ़ाई अभी अभी क्लास आप रिपीट करोगी, पढ़ोगी, प्रैक्टिस करोगी तो हिप्पोकैम्पस क्या करेगा? उस मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाके सेव करेगा, जो आप मतलब बहुत दिन तक लॉन्ग टर्म तक याद रखोगी. जैसे कि मैं अगर आप लोगों से पूछती हूँ तो आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो आप लोग झट से बोल दोगे आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका नाम क्या है आप बता दोगे, आपका घर का एड्रेस क्या है बता दोगे, बिकॉज ऑल दिस मेमोरी विल बी memory was stored in your hippocampus. These all are is long term memories. Okay. और कैसे आप बोल सकते हो? क्योंकि हिप्पोकैम्पस वो सारा मेमोरीज को स्टोर करके रखते हैं. ठीक है. सो दिस इज हिप्पोकैम्पस वेयर वी स्टोर्ड ऑल आवर मेमोरीज. Okay. Okay. So अभी क्या? So we have studied up to hippocampus. Okay. Next we will see the next chapter, next portion. It is called
thalamus. This egg-shaped portion is called thalamus. Okay, this is made up with gray matter. Okay, so what is the main function of thalamus? It acts as a relay station of all the sensory impulses. Okay, it carries sensory information from different parts of our body to cerebrum and then limbic system. Okay, so through this thalamus we can identify what is hot, what is cold, all these things. Okay, let's take an example. जैसे कि मान लो कि कैसे रिले करते हैं ऑल द सेंस ऑर्गन से. जैसे मान लो कि अभी आप बैठे हो और आपकी पैर में गर्म पानी गिर गया. ठीक है, तो उस जिस पैर में गर्म पानी गिरा उस पैर की न्यूरॉन से वो इंफॉर्मेशन थैलामस क्या करता है, कैरी करके वहां पे लेके जाता है और उसके बाद वहां पे वो एनालाइज करता है और वहां से वो जो इंफॉर्मेशन है वो सेरिब्रम एंड अदर लिम्बिक सिस्टम में वो ट्रांसफर करता है और वो फील करता है कि यार ये चीज गर्म है. ठीक है, वो जो फीलिंग्स, वो जो आइडेंटिफिकेशन वो थैलामस ही करता है कि यार ये पानी गर्म है. ठीक है, next structure is hypothalamus. So hypothalamus is situated just below the thalamus. Hypo means below. So hypothalamus means hypothalamus is situated just below the thalamus. Okay, so what is the main functions of hypothalamus? Hypothalamus regulates autonomic nervous system like all our hunger, thirst, sex drive, temperature control, like body's homeostasis. Okay, it will be controlled by hypothesis. Okay, so one more important function of hypothesis is it connects our nervous system to our to endocrine system. Here pituitary gland is situated here. Okay, so hypothalamus, what it does, it connects pituitary gland. This pituitary gland is a part of endocrine system. So hypothalamus is a part of central nervous system. So hypothalamus connects endocrine system to with central nervous system with the help of hypothalamus. Okay, so this is about limbic system. Okay, understand? Next we'll see the lobes of brain. Okay, next we'll see the lobes of brain. So here mainly we can see it contains mainly 4 lobes. Okay, 4 lobes mainly. First is frontal lobe. Okay, next is parietal lobe, next is occipital lobe, and next is temporal lobe. Okay, so see, let's see one by one. So first we'll see the frontal lobe. Frontal lobe also divided into some parts. Okay, this blue color part is called motor cortex. Okay, this blue color part is called motor cortex. Okay, so this part, this is motor cortex. Okay, so motor cortex only responsible for our voluntary motor activity. जैसे कि अभी हमको चलना है, अभी हमको डांस करना है, all this motor activity will be controlled by motor cortex. Okay, next this portion is called premotor cortex. Okay, premotor cortex will be it is responsible for storing our motor patterns. Okay, it is responsible for storing our motor patterns. Okay, कौन सी pattern होगा movement का, all these things will be storing by premotor cortex. So the next area, it is prefrontal cortex or PFC, prefrontal area. This is the largest portion and this is the most important portion of frontal lobe. Okay, what happened in this, what is the main functions of prefrontal areas is mainly all the higher functions. Okay, all the higher and complex functions is controlled by our prefrontal areas. Okay, like concentration, reasoning, judgment, emotion, higher level of thinking, planning, problem solving, motivations, all these things will be controlled by our prefrontal areas. Okay, so in frontal lobe there is one more area. Here I pointed is a red. It is called Broca's area. Broca's area is mainly responsible
responsible for our language production. Okay, हम लोग जो बात करते हैं वो लैंग्वेज प्रोडक्शन का मेन सेंटर होता है ब्रोकास एरिया. सो दिस इज ऑल अबाउट आवर फ्रंटल लोब. Next we'll see about the parietal lobe. Okay, so what is the main parts? Here we see parietal lobes is here, it is orange color portion I have marked in parietal lobe. It is called sensory area. Okay, so what is the main functions of parietal lobe? Okay, its main function is it inputs the senses mainly from the skin. Okay, senses like touch, like pain, like temperature. Okay, and then it relay through thalamus to the parietal lobe. Okay, बॉडी से जो भी सेंसेस वो इनपुट करता है. ओके, मेनली वो कौन सा सेंस इनपुट करता है? लाइक टच, स्किन के थ्रू जो सेंसेस आता है लाइक टच, पेन एंड टेम्परेचर, ऑल दिस थिंग्स. फिर यहाँ पे आके वो क्या करता है? रिले करता है थ्रू थैलामस. ओके, सो और भी फंक्शंस है पैराइटल लोब का, जैसे लाइक सम स्पेशल रिलेशनशिप एंड सम एकेडमिक फंक्शंस लाइक रीडिंग एंड लैंग्वेज is also some important functions of parietal lobe. Okay, next we will see about the temporal lobe. Temporal lobe is mainly made up with primary auditory cortex. So the main function of temporal lobe is hearing. Okay, so one more main function of temporal lobe is memory. Okay, because hippocampus is situated here, so with the help of hippocampus, temporal lobe is responsible for memorizing. Okay, then next is, see, processing information. Means all the auditory and all the sensory stimuli comes from our peripheral nervous system, will process here in temporal nervous system, and then it will process through all in our other brain areas. Okay, so all the information processing, auditory, visual, all the information will process here, which came from different parts of body, and then it will transfer to another part of the brain. Okay, and here we can see one more red color round area. It is called Wernicke's area. This area is mainly responsible for our understanding and comprehension of language understanding and comprehension. Okay, so these two areas synchronously responsible for our language. Okay, how we speak fluently, or how we speak like this, these things, these two Broca's area and Wernicke's area will be responsible for that. Okay, one more thing, in between frontal lobe and parietal lobe there is a sulcus called central sulcus, and in between frontal and temporal lobe there is a sulcus called Salvian fissure called Salvian fissure. So this is about temporal lobe. Last is occipital lobe. So occipital lobe is situated posteriorly, and here optic nerve is situated, and its main function is vision. It's help us to see the things. Okay, and one more important functions in occipital lobe is it recognition of shapes and colors. See here, I have drawn some shapes, like it is triangle, it is round, it is square. So like this, it is red color, it is yellow color. So this occipital lobe is help us to identify what is the color, what is the shape, all these things. Okay, so this is about the lobes of brain. Understand? So next we'll see about the midbrain. Okay, so midbrain. So midbrain is mainly situated. Midbrain is mainly situated in between forebrain and hindbrain. Okay, so here we can see tectum. Okay, so tectum, it consists of two calculi, two colliculi. Like tectum is the so rib. Okay,
Tectum is the rib of the midbrain. Tectum is the rib of the midbrain. Okay. So tectum is consist of two colliculi, like inferior colliculi. See, this is the butterfly structure. Okay. Four butterfly like structure is there. So the superior one is called superior colliculi, and the inferior one is called inferior colliculi. Okay. So together in four colliculi, we can tell corpora quadrigemina. Okay, two superior colliculi and two inferior colliculi in together, we can tell corpora quadrigemina. Okay, so the next we can see cerebral pentacle. Okay, next we can see cerebral pentacle. See, this disc like structure is called cerebral pentacle. If this is the cross section of midbrain, here we can identify this structure is this structure is called cerebral peduncle. Okay, cerebral peduncle. Okay, and this is called the cerebral peduncle actually is a bundle of nerve fiber. Okay, it connects our forebrain and midbrain. Okay, through this cerebral peduncle, midbrain and forebrain is connected. Okay, so it includes tegmentum. Tegmentum means this tegmentum. Okay, this include tegmentum. Tegmentum, also called reticular formation, is situated in medulla. Okay, then it also contain this crush cerebri. Okay, this is called cerebral aqueduct and aqueduct, cerebral aqueduct, and this red portion is called cranial nerve 4. Okay, so one more important portion is there in midbrain is called this brown colored portion is called substantia nigra. Okay, so substantia nigra is very important. Okay, so substantia nigra is mainly responsible for our motor functions. Okay, substantia nigra is mainly responsible for our movement and motor functions. Okay, the substantia nigra have connected with frontal lobes and other areas of the brain involved in motor functions. Okay, next it produce one more important functions of substantia nigra is production of dopamine. Okay, dopamine is a neurotransmitter which is mainly responsible for our reward system, our motivation and our muscle movement system. Reward system क्या है? अभी ये नया वर्ड आ गया रिवार्ड सिस्टम. सो रिवार्ड सिस्टम क्या है? रिवार्ड सिस्टम होता है सपोज आपने आज एक पेस्ट्री खाया. ठीक है, वो पेस्ट्री खाने के बाद आपको वो पेस्ट्री बहुत पसंद आया. ठीक है, तो वो आपको रिवार्ड देगा, आपको खुशी देगा, वो खुशी आपके लिए रिवार्ड होगा. ठीक है, तो दोबारा आप क्या करेंगे? वो पेस्ट्री खाने जाएंगे और फिर वो रिवार्ड मतलब वो खुशी आपको मिलेगा. सो आपने वो जो हैबिट है पेस्ट्री खाने का वो बार बार खाएंगे क्योंकि वो उससे आपको रिवार्ड मिलेगा. वो जो रिवार्ड आपको मिलता है और एक चीज को आप हैबिट में कन्वर्ट करते हो थ्रू रिवार्ड, उसको बोलते हैं हम reward. Okay, so this reward is regulated by our dopamine which is secreted from substantia nigra. Okay, so these are all the parts of midbrain. So what is the main functions of midbrain? Overall we can see, overall the main functions of midbrain, it controls our reflex movement. Reflex movement means सपोज अभी मैंने आप लोगों को बोला था कि आपके हाथ में गर्म पानी, आपके पैर में गर्म पानी गिर गया है. ठीक है, तो जो इम्पल्स वहां से थैलामस में गया. ठीक है, तो आपको फील हुआ था कि वो हॉट है या कोल्ड है. ठीक है, अभी रिफ्लेक्स मूवमेंट में क्या होगा, वो आपको आपका जो हॉट है या कोल्ड है वो आपको फील हुआ. उसके बाद वो अगर ज्यादा हॉट है या ज्यादा कोल्ड है तो आप क्या करेंगे, वो पैर वहां से उठा लेंगे, विथड्रॉ कर लेंगे. वो जो रिफ्लेक्स है उसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्स मूवमेंट. एंड ऑल्सो इट इज कंट्रोल आवर हेयरिंग रिफ्लेक्स. हेयरिंग रिफ्लेक्स मीन्स जैसे कि मेरे कोई आवाज आते हैं तो हम झट करके पीछे मुड़ के या तो सामने देखते हैं. ठीक है, वो जो रिफ्लेक्सेस होता है उसको हम बोलते हैं हियरिंग रिफ्लेक्सेस. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट मिड ब्रेन. सो नेक्स्ट सी अबाउट द हिल ब्रेन. So hindbrain. Okay, so hindbrain is located in the
lower back. Okay, it is located in the lower back part of the brain. Okay, it includes most of the brain. Hind brain में most of the brain stem involve होता है. Brain stem is made up with midbrain. See, this is the midbrain, the pons and medulla. Okay, brain stem. So most part, this part is called ब्रेन स्टेम. सो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हिंड ब्रेन है, तो यहाँ पे 2/3 portion of brain stem will be situated in hind brain. See here only one portion, and बाकी 2 portion is situated in hind brain. Okay. And one more structure. And what is hindbrain consist of? Hindbrain consists of pons, this portion, the medulla, and this coral shaped structure called cerebellum. Okay, so we'll see one by one. So first we'll see the portion, hindbrain portion, pons. Okay, this is pons. Okay, it pons connects rest of the brain stem to the cerebral cortex. Okay, पॉन्स क्या करता है? ब्रेन थ्रो ब्रेन स्टेम सेरिब्रल कॉर्टेक्स में कनेक्ट होता है. ठीक है, इट सिट्स राइट अंडरनीथ ऑफ आवर मिड ब्रेन. मिड ब्रेन के ठीक नीचे pons situated होता है. Okay, and it serve as a coordinating center for our signals. Okay, and communication that flow between two brain hemisphere. Okay, ये हमारा कोऑर्डिनेशन सेंटर के हिसाब में तौर पे काम करता है. ओके, और जो भी सिग्नल आता है इधर से पेरिफेरल थ्रू पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, वो सारे सिग्नल को क्या करता है, वो अपना दोनों जो हेमिस्फेयर है उसमें फ्लो करते हैं, उसमें ट्रांसफर कर देते हैं. जो भी सिग्नल आता है थ्रू पॉन्स, वो क्या करता है, वो सिग्नल को कोऑर्डिनेट कर देते हैं. ठीक है, सो अभी पॉन्स का मेन फंक्शंस क्या होता है. ठीक है, तो पॉन्स का मेन फंक्शन, पॉन्स मतलब क्या है, अगर हम इसमें याद करने के लिए ऐसे सीखेंगे, पॉन्स मतलब पाउडर भी होता है, पॉन्स पाउडर. ओके, सो पॉन्स पाउडर से अगर हम ऐसे याद रखेंगे, पॉन्स पाउडर को रात को सोने से पहले हम पॉन्स पाउडर लगाते हैं और रिलैक्स करते हैं और रेस्ट करते हैं, और उसके बाद एक डीप स्लीप में चले जाते हैं. ठीक है, सो द मेन फंक्शंस इज द मेन function of pons is sleeping, resting, relaxing. Okay, you can understand now. Okay, then one more main function of pons is it control the breathing pattern. Okay, respiratory center is situated here in pons. Okay, our respiratory system is situated in pons, so all the breathing pattern is controlled by pons. Okay, सो यार और भी कुछ पॉन्ड्स का फंक्शंस होता है. ठीक है, और भी ये सब छोड़ के भी और भी कुछ पॉन्ड्स का फंक्शन होता है. हमको पता है हमारा 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स होता है. ठीक है, इसमें से 4 पेयर जो है क्रेनियल नर्व का, वो हमारा पॉन्ड्स में मिलता है. ठीक है, 4 पेयर्स क्रेनियल नर्व हमारा पॉन्ड्स में मिलता है. कौन सा क्रेनियल नर्व पॉन्ड्स में आता है? एब्डुसेंस नर्व, ओके, फेशियल नर्व, वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व एंड ट्राइजेमिनल नर्व. ओके, सो इसको याद करने के लिए हम एक एब्रिविएशन करते हैं, देखते हैं. सो 4 क्रेनियल नर्व्स इन पॉन्स, क्या क्या होगा? FAV. ओके, फेवरिट टी ऐसे लिख लेते हैं, फेवरिट टी. ओके, सो FAV टी, ये नहीं होगा टी. ओके, सो एफ से क्या होता है? एफ से होता है फेशियल नर्व. ओके, ए से क्या होता है? एब्डुसेंस नर्व. ओके, वी से होता है वेस्टी वुलो कॉक्लियर, एंड टी से होता है ट्राइजेमिनल नर्व. ओके, सो लेट्स सी उसका फंक्शन क्या होता है. फेशियल नर्व का जो फंक्शन होता है वो क्या करता है? कोऑर्डिनेट करता है हमारा मूवमेंट्स जो है उसको कोऑर्डिनेट करता है, एंड इट कोऑर्डिनेट्स द सेंसेशन ऑफ आवर फेस. ओके, देन एब्डुसेंस जो नर्व होता है उसका मेन फंक्शंस होता है, इट कोऑर्डिनेट्स आवर आई मूवमेंट्स. ओके, देन वेस्टिबुलर कोक्लियर जो नर्व होता है उसका मेन फंक्शंस होता है, इट प्रोसेस साउंड्स एंड हेल्प्स अस मेंटेन बैलेंस. ओके,
नेक्स्ट ट्राइजेमिनल जो नर्व होता है उसका मेन फंक्शंस होता है कोऑर्डिनेट्स च्यूइंग, जो हम लोग च्यूई करते हैं च्यूइंग गम, सो इट्स मेन फंक्शन होता है कोऑर्डिनेट्स च्यूइंग एंड कैरी सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम फेस टू हेड। फेस से हेड में जितना भी सेंसरी इंफॉर्मेशन है वो कैरीड करना ट्राइजेमिनल नर्व का काम होता है। ओके, सो द नेक्स्ट वी कैन सी अबाउट मेडुला। नेक्स्ट वी कैन सी मेडुला। सो मेडुला जो है ये लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम है एंड द ओवरऑल हिंड ब्रेन इज द मेडुला। ये जो सबसे लोअर पार्ट जो होता है ब्रेन स्टेम का और हिंड ब्रेन का इज कॉल्ड मेडुला। ओके, इट कंट्रोल्स, ये जो मेडुला है ना, मेडुला में मोस्ट ऑफ आवर ऑटोनोमिक वाइटल फंक्शंस जो है वो कंट्रोल होता है, जैसे कि हमारा हार्ट रेट, हमारा ब्लड प्रेशर, हमारा ब्रीदिंग, और भी बहुत सारा इनवॉलंटरी रिफ्लेक्सेस लाइक स्नीजिंग, कॉफिंग, सॉल्विंग। ओके, सो अभी इसको याद कैसे रखेंगे, ठीक है, मेडुला, ठीक है, मेडुला, इससे हमको क्या याद आता है, मेडल। ओके, मेडल हम कैसे पहनते हैं, सपोज ये इंसान है और यहाँ पे हमने एक मेडल पहना है, ठीक है, सो ये मेडल, ये मेडल जो कहाँ पे आता है, इस एरिया में, ठीक है, मेनली जो यहाँ पे आके रुकता है, तो इस एरिया में क्या सिचुएटेड है, हार्ट एंड लंग्स। ओके, हार्ट and lungs. So the main functions of medulla is breathing or respiration and circulation or maintaining the heart rate. Okay, फिर उसके बाद वो कहाँ कहाँ टच करके आता है, वो नेक में टच करके आता है, सो कौन सा रिफ्लेक्सेस वो कंट्रोल करेगा, जैसे कि नेक में कफिंग रिफ्लेक्स हो गया, ठीक है, देन कफिंग रिफ्लेक्स वो कंट्रोल करता है, और भी रिफ्लेक्सेस लाइक swallowing, लाइक vomiting, all this sneezing, all this reflex also controlled by our medulla. Okay, so अभी हम देखते हैं कि यहाँ मेडुला जो है वहां पे भी it is made up with white matter and gray matter, and it also contain 4 cranial nerve. सो कौन सा इसको हम याद रखेंगे, तो कैसे रखेंगे, भाग हैप्पी। ओके, सो VAG हैप्पी का H, V से हो गया वेगस नर्व, A से हो गया एक्सेसोरी नर्व, G से हो गया ग्लोसोफेरिंजियल नर्व, एंड H से हो गया हमारा हाइपोग्लोसल नर्व। ओके, दिस 4 cranial nerve will be situated in medulla. अभी देखते हैं इच नर्व क्या क्या फंक्शन होता है, जैसे वेगस नर्व का मेनली फंक्शन होता है इट कंट्रोल आवर माउथ मूवमेंट्स। ओके, वॉइस, आवर गैग रिफ्लेक्स विल बी कंट्रोल्ड बाय वेगस नर्व। एक्सेसरी नर्व का मेन फंक्शंस होता है इट कोऑर्डिनेट्स आवर हेड एंड नेक मूवमेंट्स। ओके, ग्लोसोफेरिंजियल का मेन फंक्शन होता है कोऑर्डिनेट्स सम टेस्ट सेंसेशन एंड माउथ मूवमेंट, एंड हाइपोग्लोसल का मेन फंक्शन होता है इट कंट्रोल आवर टंग मूवमेंट्स एंड मसल इन्वॉल्व इन आवर स्पीच। ओके, अंडरस्टैंड? So the last part is called this part is called cerebellum. So cerebellum, it is situated behind the pons. Okay, so it is also called little brain. This part also called little brain. Okay, just like our cerebral cortex, it has 2 hemisphere. Okay, so the dense layer of hemisphere is called gray matter and surrounding inner region of white matter. Okay, it also contains some special neurons called Purkinje cells. Okay, so it is capable of processing many signals at once. Okay, due to its highly complex dendrite branches. Okay, so what is the main functions of cerebellum? So cerebellum, bell, here it is bell. Bell mean balance. Okay, so from here we can remember the main functions of cerebellum is to mostly maintain our voluntary movement and maintaining balance. Okay,
So main functions of cerebellum is maintaining balance and postures. Okay, balance, जैसे कि हम डांस करने जा रहे हैं तो एक अच्छा बैलेंस बहुत जरूरी है, ठीक है. सो पोस्चर एंड कोऑर्डिनेटिंग आवर ऑल मसल मूवमेंट्स. ओके, डांस करने के टाइम में हम लोगों को बहुत अच्छे सारा हर कोई मसल मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करना होता है, एंड दिस इज we can do is due to cerebellum. It is responsible for coordinating all our voluntary muscle movement. Okay. And next, another function is motor memory. Means like जैसे कि हमने बाइसाइकिल राइड करना सीखा है, स्विमिंग करना सीखा है, ऑल दिस मेमोरी विल बी कंट्रोल्ड बाय आवर दिस cerebellum. Okay. So next, the total overall functions of brain stem is breathing, digestion, circulation, and heart rate. Okay. So this is all about hindbrain. Understand everyone? Okay. Thank you.